Welcome student. Today we will practice some number of questions on force on moving charge, motion of charge particle in uniform magnetic field. Then we will study the behavior of current carrying coil. So this was the question which we left in the previous class. A proton or charge particle, positive charge particle moving with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected if there are four answers. You can note it down. First is perpendicular to B. Second is parallel to V and perpendicular to B. Third, which is the correct one, E, B and V are mutually perpendicular and V equal to E by B. E, B and V are mutually perpendicular and V equal to E by B. The fourth answer, E and B are parallel to V. देखिए अब इसमें सबसे important बात यह है, if any charge particle is moving in a region where both electric field and magnetic field are present, then the charge particle will experience two forces. One due to the presence of electric field and other is due to the presence of magnetic field. If it remains undeflected, that means the net force on proton is zero. This is only possible when electric force cancels the magnetic force. It is only possible when electric force cancels the magnetic force. So I want to say that it is only possible that when electric force F electric should be equal to F magnetic and they should be equal and opposite. They should be equal and opposite. So this is the concept. तो पहला कंसेप्ट तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें. If you are done with this, then we can move to the next slide and we will take the example of it. So this is most important, let me tell you. Most important way of asking a kind of theoretical question. You can say that, but it is very important. So this can be the expected in your examination. And very soon. Okay, are you done with this? So answer is very clear. V equal to E by B. All the three are mutually perpendicular and V equal to E by B. So C answer is correct. So I think you are done with it. So let's move to the next page and we will take the
ये देखिए, सपोज करिए दिस इज प्रोटॉन, एंड देखिए अब प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, मैग्नेटिक फोर्स y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में है, तो हम एफ बी आई अप्लाई कर दें। बी माइनस बी का मतलब हो गया माइनस जेड, हमसे दूर एफ बी, तो ये फिंगर अंदर की तरफ आएगी प्लेन ऑफ पेपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो प्रोटॉन यहाँ जा रहा है, दैट इज द वेलोसिटी। और हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को खुद की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। तो आप इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लीजिए, एफ डी आई, एफ ऊपर प्लस वाई, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड मतलब अंदर की तरफ, ये फिंगर ऐसे जाएगी, प्लेन ऑफ पेपर पे अप्लाई करिए और करके देखिए और मुझे बताइए। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to magnetic field, magnetic field is perpendicular to velocity, they are mutually perpendicular, this you can see in the diagram। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें, इसे रिवाइज करें। v equal to e upon v, v is the velocity of charge particle and q is the proton, चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन इज मूविंग, proton is moving along plus x-axis, magnetic field acts along minus z-axis, and electric field acts along minus y-axis। और हमेशा हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज experiences the electric force in the direction of electric field। ये देखिए दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। Fm equal to Fe। So this is a very good example। Are you done with it? आपने इसे नोट कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कंडीशंस आप इसे याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। In this week you will receive the notes on all the chapters। Okay, let's move to the next question।
When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed of v0, it moves with initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are. तो दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम इसमें डायग्राम्स बनाएंगे। दिस इज ईस्ट, वेस्ट minus z, that is north। एक मिनट, थोड़ा हम इसको करेक्ट करेंगे। प्लस z, yes, it is south, it is north। okay, when proton is released from rest in a room, तो देखिए जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस पर फोर्स अप्लाई करती है, तब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे तभी लगता है जब वो मोशन में हो, when it is under some kind of motion, when it is moving from rest in a room, it starts with initial acceleration towards v0 west, so that is the direction of electric field, and electric force is q into e, mass into acceleration, charge on proton is e, equation 1। when it is projected towards north with speed v0, with speed v0, that is the direction of current, that is the direction of current, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west। तो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स वेस्ट। अब हम एफ बी आई, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। एफ बी आई, करंट माइनस जेड, कम से दूर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी आई, ये देखिए ऐसे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स को हमने वेस्ट पे रखना है, मतलब लेफ्ट पे रखना है, और एफ बी आई और इस फिंगर को अंदर रखना है। तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई ma0 अपॉन ई, और उसकी डायरेक्शन हो गई वेस्ट। तो ये दो आंसर हमें मिले, बी और सी। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा m और x, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 3a0, 3a0, चार्ज प्रोटॉन, वेलोसिटी v0, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई 3ma0 अपॉन ev0, and that is vertically downward. So correct answer is C. So these are the tough questions. आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से मैं बता देता हूँ। एफ बी आई, करंट का फिंगर, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है, करंट अंदर की तरफ है, ये देखिए ऐसे लगेगा।
तो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना सीख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। जब रेस्ट में होता है पार्टिकल तब उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जब वो वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब रेस्ट में था तो इनिशियल एक्सेलरेशन a0 टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे खुद की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज C. C is the correct answer. So when you note it down, please tell me. तो हम आगे बढ़ेंगे. This is the correct answer. So आप इसे नोट कर लीजिए. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी, जब पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करेगा. फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन, या इसलिए हमने यहाँ लिखा मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक्सलरेशन कितना है 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट. इसका मतलब फोर्स भी टुवर्ड्स वेस्ट लगता था, इसलिए हम पहले इसे डायरेक्शन ले लेंगे और उसके बाद फोर्स को अप्लाई करेंगे. तो आप इसे नोट कर लीजिए. देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अब देखिए हम अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं. यस. द चार्ज ऑन a particle y is double the charge on particle x. तो अब हम इसे लिखते जाएंगे. qy is 2 times of qx. Equation 1. These two particles x and y, after being accelerated through the same potential difference, let they are okay. After being accelerated through the same potential difference, enter a region of uniform magnetic field. So both x and y are accelerated by the same potential difference and they enter the same magnetic field at right angle. And describe circular path of radii r1 and r2. r1 and r2. अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस ऑफ y, क्योंकि मेंशन पहले y हुआ है, is r1 and radius of x is r2. That is the second condition. r1 and r2. Okay, one more thing, they are given the capital value, so we will write down the capital value r1 and r2. The ratio of mass of x, the ratio of mass of x to the mass of y. अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल is given by 2m into potential difference upon charge into 1 upon b. Magnetic field is constant because they move in the same magnetic field. So we get R is and potential difference is also constant. So we get R is proportional to root of m by
Q. R is proportional to root of M by Q. Ry upon Rx equal to My upon Mx. So this will be Q डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये होगा Qx upon Qy. इतना आप नोट कर लीजिए. We will be needing the second slide. Qy equal to 2Qx and Ry is R1 and Rx is R2. Ry upon Rx, we have got it. Root of My upon Mx. थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Okay, so we will move to the next slide and solve it. Okay. अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए. अब हम इसे अगली स्लाइड में जाकर सॉल्व करेंगे. और फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला हो गया आपका. और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इसे सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मूला डिराइव करिए, फिर ऐसे सॉल्व करिए. और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंपटीशन में. तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं. तो फिर मैं अगली स्टेप पर मूव कर रहा हूँ. देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कंसेप्ट प्रैक्टिस होती है. तो ये था हमारा Ry upon Rx equal to root of My upon Mx into Qx upon Qy. अब देखिए, My upon Mx, और आप जानते हैं Qy को क्या हम लिख सकते हैं, 2Qx. ये हमने लिख दिया, ये कैंसिल हो गया. So Ry upon Rx equal to 1 upon root 2. अब देखिए, मास के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ Mx अपॉन My इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 Rx अपॉन Ry. और Rx आपको मालूम है हमने क्या माना था, कैपिटल R2 अपॉन R1 स्क्वायरिंग mass ratio Mx upon My will be 1 by 2 R2 upon R1 square. So you can say that R2 square upon 2 R1 square. तो अब आप आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं. The ratio of mass of X to the mass of Y. तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. Mx अपॉन My राइट हैंड साइड में चले गए तो ये हो गया Rx अपॉन Ry. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप फिर से ध्यान दीजिए. अच्छा, 2 पार्टिकल X एंड Y. तो थोड़ा देखिए, यहाँ पर हम लोगों से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, रीडिंग मिस्टेक हुआ है.
इट हैपन्स। तो देखिए ये बोला गया टू पार्टिकल एक्स एंड वाई आफ्टर बीइंग एक्सलरेटेड, एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंड वाई बोला गया है, तो ये आर वाई क्या होगा, ये देखिए यहाँ हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई, तो ये आर वन होगा और ये आर टू होगा। तो पहले तो ये करेक्शन आप कर लीजिए, इसलिए हमें आंसर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पहले लैंग्वेज वाई की थी, फिर वापस में लैंग्वेज में क्या आ गया, एक्स एंड वाई। तो एक्स पहला पार्टिकल हो गया और वाई दूसरा पार्टिकल हो गया। तो यहाँ हमने एम एक्स अपॉन एम वाई, और अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो थोड़ा, ये आर वन पुट करेंगे हम, और ये हम पुट करेंगे आर टू। आर वन अपॉन आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर अपॉन टू आर टू स्क्वायर। So correct answer is C. Correct answer is C. एक mistake, single mistake in reading the question, in understanding the approach, in applying the formula, आपको एक गलत आंसर की तरफ ले जाएगी, और वो गलत आंसर भी आपको चॉइस में डेफिनेटली मिलेगा। वो गलत आंसर भी चॉइस में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, a particle with 10 to the power minus 11 coulomb of charge and 10 to the power minus 7 kg mass is moving with a velocity of 10 to the power 8 meter per second along y-axis. A uniform static magnetic field B 0.5 Tesla is acting along x direction. The force on the particle. It's a good question and simple one. Charge 10 to the power minus 11 coulomb. Mass 10 to the power minus 7 kg. Velocity 10 to the power 8 j. Y-axis. Magnetic field vector is 1 by 2 because 0.5 is 1 by 2. Acting along x direction 1 by 2 I cap. Now we know that force is Q V cross B. So force can be written as 10 to the power minus 11 V 10 to the power 8 J cross half I. Now we will get F equal to 10 to the power minus 3 upon 2 J cross I. J cross I, that is minus K. This can be written as 10 into 10 upon 10 into 10 upon 10, क्योंकि नीचे 2 है, into 10 to the power minus 3 upon 2 minus K. So this will cancel 5. The force will be 5. नीचे का 10 ऊपर जाएगा, 10 to the power minus 4. So our answer is D. It's a simple question, पर हमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है।
So correct answer is D. D is the correct answer. आप इसे नोट कर लीजिए. Then we will move for the next question. और ये देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय 10 और नीचे का 10 जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 4. So the answer is 5 into 10 to the power minus 4. 5 into 10 to the power minus 4 and this should be read as 5. Let me write it more proper way. This is 5. So the answer is D. D is correct answer. Along minus k is minus z axis. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि that force will act on along the minus z axis. Minus z axis. A good question practice always makes your physics better and better. अब देखिए AIEEE is nowadays known as JEE Mains. A proton, deuteron, and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in circular trajectories in a constant magnetic field if Rp, Rd, and R alpha denote respectively the radii of trajectories of these particles, then first answer R alpha equal to Rp less than Rd. Second answer R alpha Rd is greater than Rp. Third answer R alpha equal to Rd, both are greater than Rp. Fourth answer Rp equal to Rd equal to R alpha. So let's solve it. We will use the formula R equal to root 2 me upon qb. They enter in the same magnetic field, so the magnetic field is constant. Their kinetic energy is also constant. So R is proportional to root of m by q. अब देखिएगा अगली स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. हम लिखेंगे Rp is to Rd, रेशियो मेथड is to R alpha equal to mass P, mass D, mass of alpha, that is in ratio, upon Qp is to Qd is to Q alpha. As we know that ratio of masses of proton, deuteron, alpha particle is root 1, root 2 is to root 4. Charges ratio 1 is to 1 is to 2. So this will become 1 is to root 2 is to 1. तो ये देखिए 1-1 रेशियो किसका आ रहा है, आरपी और आर अल्फा. तो इसका मतलब आर अल्फा और आरपी का रेडियस सेम होगा. ठीक है. और ड्यूट्रॉन का रेडियस में फैक्टर आ रहा है रूट 2. इसका मतलब ड्यूट्रॉन का रेडियस ज्यादा होगा. तो करेक्ट आंसर इज ए. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट 2 आर डी. एक मिनट, वी शुड नॉट राइट लाइक दिस. ड्यूट्रॉन में रूट 2 आ रहा है तो ड्यूट्रॉन की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी. और प्रोटॉन अल्फा की रेडियस क्या होगी,
सेम होगी। तो करेक्ट आंसर इज ई। इज द करेक्ट आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस लेवल क्या होगा, चेंज होगा और अच्छा होगा। सो यू आर डन विद इट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। CBSE PMT, it is called NEET. It used to be conducted by the CBSE board previously. Nowadays, National Testing Agency conducts all the competition. A very straight, long, straight wire carries a current I. Okay, carries a current I. तो ये देखिए, ये आपको लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है। At the instant when a charge plus Q at point P has velocity V as shown towards right, the force on charge particle. Okay, तो देखिए स्टेप नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। स्टेप 1, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट current carrying wire at point P. राइट हैंड फॉर्म रूल लगाइए। कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पुट द फिंगर्स एट पॉइंट P। और फिंगर्स को पॉइंट P पर रखिए। आई एम डूइंग दैट हियर। आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ what I found. Palm is not visible at P. So the magnetic field will be obviously cross. So charge particle is moving. अब हम force on charge particle को निकालने के लिए step 2, direction of force on charge particle is found by using Fleming's left hand rule. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है FBI और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
So that is the direction of current. FBI. The force will be act, act on the charge particle in what direction? Y direction along OY. So do you understand it? Chat with me. And you have noted it. Again, chat with me. Experiences the force in plus y-axis direction, i.e. along OY. So correct answer is C. Correct answer is C. ओके तो स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. We'll move to the next slide. For the current carrying wire will definitely produce its magnetic field at point P. So by using a right hand palm rule, we found that the magnetic field is acting normal to the plane of paper and inward. So due to this magnetic field, the moving charge particle plus capital Q will experience a magnetic force, and the direction of magnetic force we found by using Fleming's left hand rule, force, magnetic field and current. देखिए करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो आप इसे नोट करिए. एवरी करंट कैरिंग लूप, let me tell you the background for this. It was practically observed when two current carrying loops are brought nearer, they experiences magnetic force due to the presence of the other. So they experience a magnetic force. As we know that there exists a magnetic force between two bar magnets. North pole and south pole attract each other, and north repel each other, south and south repel each other. So it was experienced that when two current carrying loops are kept nearer to each other, they apply some kind of magnetic force on each other. So what was the reason for this magnetic force? So we say that current carrying loop acts like a magnet, or I want to say that magnetic dipole. The magnetic dipole has got two poles, north pole and south pole. तो ये आपको नोट करना है. A current carrying circular coil behaves as a bar magnet. Behaves as a bar magnet whose magnetic moment. अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया गया है. कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट. कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स I current flowing in the coil, A is the area of coil. तो ये देखिए आप इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हम एज्यूम कर सकते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल it behaves like a magnet. So we can assume that on the axis of this current carrying coil a magnet is placed along the axis of circular coil.
तो देखिए ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको ड्रॉ कर लीजिए। और इस के मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज अ वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए द फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जस्ट सी दैट डायरेक्शन ऑफ करंट, and the thumb of right hand will give the direction of, देखिए, since coil carries what current in anti-clockwise direction, so curling we are turning our finger in which direction, anti-clockwise direction। और अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होती तो ऐसे होता। इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इसको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट NIA and number of turns in the coil, I, current through the coil, and A, area of the coil। एंड मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिखवाना चाहता हूँ फॉर योर ओन इंटरेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको हिंट दे रहा हूँ, आर इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आप फिंगर्स को ऐसे कर्व कर सकते हैं। देखिए फॉर मी आई एम, तो प्लीज नोट इट डाउन। ये हिंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। So please note it down and tell me whether you are done with it or not. So a current carrying circular coil behaves like a magnetic dipole. It behaves as a magnet is kept along its axis. So that is why when two circular coils kept nearer to each other, they apply force on each other, because till the current is flowing through the coil, a magnetic pole is activated in the plane of coil, magnetic dipole, rather to say magnetic dipole। तो इस तरह से बिहेव करती है कि उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है। सो नोट इट डाउन, दिस इज। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, that is denoted by M। Consider a magnet which has got two poles. Magnetic moment of magnet is a vector quantity which is directed from south pole to north pole
along the magnetic axis of a magnet। देखिए इसका मैग्नेटिक एक्सिस बना देते हैं, एंड m is magnetic moment। Every magnet has got its magnetic moment that is given by 2L, this length of magnet। I think now you should note it down। अब आपको क्लियर हो जाएगा the concept of magnetic moment। So every current carrying coil behaves like a magnetic dipole। It behaves like a magnet। ऐसा लगता है कि कॉइल के सेंटर पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, क्योंकि वो सारे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को शो करती है। A current carrying coil, in other words, I should tell you, shows the properties of magnet। That means it behaves like a magnet। तो इसको नोट कर लें तो आप बताएं मुझे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। M is the pole strength। Every pole has got a property of attracting or repelling the other pole। Similarly, the pole strength has got the same meaning as the charge। Pole strength of a magnet has got the same meaning as the charge in electrostatics। Two charges may attract, may repel each other। Similarly, the two magnetic poles may attract, may repel each other। So, are you done with this? अब आपको ये चीज बेटर समझ में आ जाएगी। ये देखिए, और देखिए एक और तरीका है। Magnetic moment is always directed from south pole to north pole। And current is flowing in, one more thing, here current is flowing in anti-clockwise direction। Current is flowing in anti-clockwise direction। So every current carrying loop behaves like a magnetic dipole। There should not be any doubt about this। अब देखिए, अब concluding part note करना है। For a given perimeter, circular shape has the maximum area, his maximum magnetic moment। अगर बहुत सारे शेप्स दिए गए हो, हमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हो, तो किस शेप का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? सर्कुलर शेप का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर ए गिवन पेरीमीटर, मान लीजिए आपको बहुत सारे शेप दिए गए हैं। आपको रेक्टेंगुलर शेप दिया है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। तीन एग्जांपल ले लेते हैं।
और तीनों कॉइल्स के पैरामीटर सेम है, तो किस कॉइल का एरिया सबसे ज्यादा होगा? सर्कुलर कॉइल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए मैंने भी आपको ये बताया था बी एंड एम आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ थोड़ा हम इसको समझ लें। इसको आप नोट कर लें and tell me whether you have noted or not. अब देखिए सबसे इजी मेथड ये है कि आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी लूप और कॉइल बी एट सेंटर ड्यू टू करंट इन लूप एंड एम आर ऑलवेज पैरेलल। ये जो लिखा हुआ है ये एंड लिखा हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पर एंड एम आर ऑलवेज पैरेलल। So we can say that angle between B and M is 0. Okay.